अच्छा, think of liquid water in a container. अगर उसमें when the rate of evaporation and the rate of condensation becomes equal, then the quantities of the water vapors would remain constant. Like every second, if every second there are uh, water molecules getting produced, let's say 3 water molecules are getting produced, and at the same time there are 3 water molecules that are condensing back again. तो क्या होगा, नेट क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वुड रिमेन काइंड ऑफ द सेम. ठीक है, अगले सेकंड फिर से 3 वाटर मॉलिक्यूल्स दे गॉट इवेपोरेटेड. ठीक है, सो लेट्स से they turned into vapor, they escaped the liquid. ठीक है, and at this in the same time 3 other water vapor molecules they condensed. तो क्या होगा, net quantity will still remain the same. तो एक तो ये याद रखना है, एक तो इसमें ये याद रखना है कि what you should remember is that the concentration or the quantity of the reactants and products, it would become constant when the system is at equilibrium. The graph would kind of look like this. Okay, when the system is at equilibrium, your reactants and the products, their quantity would become constant. It would be a straight line. It would not be equal. ठीक है, हो सकता है ज्यादा water vapors form हो. ठीक है, maybe there's more liquid water, so the quantity will not be the same, but it would be constant. ठीक है, is that thing clear? Okay, it's going to be constant. Is that all clear? Yes or no? Is that clear? Yeah. Achha, so first thing, the Lee-Shatler principle. There are 3 concepts related to Lee-Shatler principle. The first one is if you increase temperature, increasing temperature favors the endothermic reaction, which in this case would be which one? Evaporation or condensation? But if you increase temperature, if you take this container at a higher temperature, which of the 2 reactions would speed up? क्या होगा इस केस में? Evaporation होगा, ऐसा क्या होगा? Evaporation exothermic. नहीं, evaporation is endothermic. ठीक है, तो क्या होगा कि what will happen is, if you remember, increased temperature favors the endothermic reaction. So what will happen is that if you take it to a higher temperature, then the rate of evaporation would be higher. Let's say 5 molecules evaporate हो रहे every second. तो ये 1 2 3, चलो 3 कर लेते हैं, and only one of them is condensing back. ठीक है, so only one is condensing back. The amount of water vapors क्या होते जा रहे हैं, वो ज्यादा होते जा रहे हैं. ठीक है, every second if more water molecules evaporate, so the rate of forward reaction becomes faster compared to the rate of the backward reaction. But anyways, what will happen is in दोनों में से ना one of the reactions would become faster, which in this case would be the endothermic, more evaporation. So equilibrium would favor products. There would be a lot more products produced, lot less reactants, and the equilibrium position would shift to the right. ठीक है, vice versa if you decrease temperature, decreasing temperature favors exothermic. इस case में which reaction would be faster? Condensation would be faster at lower temperature. Condensation, remember, is an exothermic reaction. At a lower temperature, water vapors will start condensing. So the amount of water vapors would become less and the amount of liquid water would become more. So ये दूसरा rule था, 2 rules. Increased temperature favors endothermic, decreased temperature favors exothermic. So the equilibrium position shifts to the left or favors reactants. How do you know? तो इसके अंदर तो clear था कि which one was exo, which one was endo. So how do you know if you have an actual reaction? How do you know which one is exo and which one is endo? It will keep changing. You look at the enthalpy change. If the enthalpy change is given as negative, it's always given for the forward reaction. So if the enthalpy change is given as minus 88 kilojoules, that means the forward is exo. So backward ulta hoga, that would be endo. So for example, if you decrease temperature, it will favor exothermic, which in this case is the forward reaction. एक और example है कि here's another reaction. The enthalpy change is given as positive. If it's given as positive, that means the forward is endo and the backward is exo. So अगर आप decrease करोगे temperature, तो backward reaction would be favored and exothermic is going to be favored. And so the exothermic would be favored in this case. Or that's the first thing. As a second one. Second rule is about pressure. If you increase pressure, the volume decreases, less gas mole side is favored. That's the second rule. उसके पीछे क्या logic है? उसके पीछे logic is
If you increase pressure, तो आप क्या कर रहे हो? What you're doing is you're compressing it. ठीक है, you're pushing the piston down. तो water vapors automatically कम बनेंगे क्योंकि जगह ही नहीं होगी. ठीक है, if I increase pressure, what will happen is that this piston over here will be pushed downwards. ठीक है, तो वो piston नीचे आता जाएगा. The water vapors बनने की the room or space available for forming water vapor would decrease. So automatically less gas would be formed if I increase pressure. Vice versa, if I decrease pressure का मतलब है कि मैं इसको like if I want to decrease pressure, I would pull it back. So if I keep pulling it back, then there would be more room available for water vapors to form, more room available for gas to form. So the rule is, okay, if you increase pressure, the volume automatically come ho jayega. You're compressing it. So less gas mole side would be favored, or that side which has fewer gas. Yeah, overall there would be less gas produced. And if you decrease pressure, the volume would increase. इसको ऊपर की तरफ लेके जाओगे, the volume would become much bigger, and there would be more room for water vapors to form. So there would be more water vapors forming, and more gas would be produced. More gas mole side would be favored. अब फिर last वाला जो rule है ना Lee-Shatler principle का, that is कि it's this one. If the concentration is increased or decreased of reactants or products, then the equilibrium would try and do the opposite, which basically means, again, the same reaction. If I decrease something, it will try to increase the same thing. If I increase something, it will try to decrease that. So for example, what if I remove all the water vapors? So मुझे था कि what will happen? Which reaction will stop? If I remove all the water vapors, so what did I do? I decreased the water vapors. So the backward reaction would stop. I mean, this reaction, condensation, will not be able to happen because there is no water vapor. But the evaporation would still go on, right? So iska matlab hai the evaporation is being favored because the other reaction has stopped altogether. It's not happening. But evaporation is happening. If it's happening, more water vapors would be produced automatically. ठीक है, तो इस रूल का मतलब है कि if you try to decrease something, it will automatically try to increase that again. Or vice versa, if I increase the water vapors, vice versa, if I increase the water vapors, what will happen is condensation would automatically speed up. You will have a lot higher condensation. Why? Because there is a lot of water vapors. The water vapors automatically, they will start condensing back again. So the last rule is you try to increase something, it tries to decrease the same thing. If you try to decrease something, it will do the opposite. But remember, this applies to concentration only. It only applies to concentration. And concentration is a term that's only used for aqueous solutions or gases. You can't increase or decrease the concentration of a solid. So remember that, okay, for solids, the concentration is always taken as a constant. So the concentration describes the spacing of molecules, like how far apart or how close together they are, whether it's a solution or whether it's a gas. This one is more concentrated. This solution is more concentrated. You can't change concentration for a solid because the particles are always tightly packed. Anyway, so that's Lee-Shatler principle. 3 rules. Increase pressure, kam gas banegi. Decrease pressure, there'll be more gas. Increase temperature, endothermic. Decrease temperature, exothermic. And you try to increase or decrease concentration, it does the exact opposite. So we're going to do the past paper for the first one. I mean, this is mostly O levels. So iske jaldi se kar lete hain ki 1 second. Not this. Lee-Shatler principle. Say this one.
Let's start from here. I'll just focus on Lee-Shatler principle questions. So I'll only focus on this thing. Which reaction is favored? So increasing the pressure, कौन सी side favor होगी? Less gas, more gas? Mikal, Muneeb, कोई? More gas. नहीं, increasing pressure, remember you're compressing it. Increasing pressure means that the less gas mole side would be favored. ये था ना increasing pressure का क्या मतलब है? You're basically pushing this piston downwards. ठीक है, that's what you're doing. ठीक है, that is. तो less gas बनेगी. I mean, the room for gas is shrinking. ठीक है, there's not enough room for gas to form. So whenever you increase pressure, less gas mole side would be favored. So कौन सी side less gas है? It's you've got on this side you've got 3 moles. On the other side you've got 2 moles. So clearly that is the side that will be favored. So yield of SO3 will increase. So that's fine. ठीक है, is that clear? ये clear है सबको? आयशा clear है? Little bit. नहीं, ये मैं इसको डिटेल में कर लेता हूँ. मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ओ लेवल्स में किया हुआ आप लोगों ने कि जस्ट मतलब ये आयशा ये किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? वरना मैं फिर Sir, क्लास I don't. हाँ I have not done that in college. I have missed it. अच्छा चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जस्ट वेरी क्विकली कि ये वाटर का एग्जांपल है ना. ठीक है, इंक्रीज प्रेशर का तो पता है ना कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर कि you've got इंक्रीज प्रेशर का क्या मतलब है? आप इस पिस्टन को किधर मूव करोगे? नीचे की तरफ ना, उसको प्रेस करोगे ना. ठीक है, ये क्लियर है? तो लेट्स से मैं प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा हूँ. एक तरफ लिक्विड बन रहा है, एक तरफ गैस बन रहा है. इन दोनों के बीच में रिएक्शन चल रहा है. ठीक है, लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है, वेपर बन रहा है, वेपर कंडेंस कर रहा है, फॉर्मिंग द लिक्विड बैक अगेन. तो मुझे एक्सप्लेन करो कि अगर मैं हाई प्रेशर पे ले जाऊं इसको एंड द पिस्टन इज पुश्ड डाउनवर्ड्स, राइट, तो गैस ज्यादा बनेगी कम बनेगी? मतलब वाटर इवेपोरेट होगा तो कितनी बनेगी? एक मॉलिक्यूल बन गया, 2 जगह ही नहीं है. समझ आइए? Yes, sir. तो आपने बस ये सोचना है कि जब आप इंक्रीज करते हो ना प्रेशर, तो द गैस इज लेस गैस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, ये बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, वाइस वर्सा इफ यू डिक्रीज प्रेशर, व्हेन यू डिक्रीज प्रेशर तो क्या कर रहे हो आप? यू पुलिंग द पिस्टन अपवर्ड्स, राइट. तो अब जगह Yes. इतनी ज्यादा होगी है कि वो वाटर जब इवेपोरेट करेगा तो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर वाटर वेपर्स टू फॉर्म. ठीक है, तो बहुत ज्यादा, अच्छा तो बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे. क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, तो अब ये पता कैसा लगेगा कौन सी साइड जो है दैट्स मोर गैस, कौन सी लेस गैस है? मैं ये तो दिमाग में उठा लो कि when you decrease pressure more gas will be produced, more gas mole side would be favored. तो अगर if you increasing pressure तो कौन सी साइड फेवर होगी? उल्टी, लेस गैस. आप कंप्रेस कर रहे हो. ठीक है, तो there's not a lot of room for gas to form, तो लेस गैस प्रोड्यूस होगी ना. तो इधर देखो, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, 3 moles of gas, they मतलब 2 moles of this and 1 mole of this, they react and they produce 2 moles. तो क्या बनेगी? लेस गैस बनेगी. Yes, sir. और अगर वाइस वर्सा रिएक्शन बैकवर्ड्स जाता है तो वो 2 moles SO3 के किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 3 moles of SO3 में, यानी मोर गैस प्रोड्यूस हो रही है, राइट. तो आपने बस ये देखना है कि इफ यू इंक्रीज प्रेशर तो लेस गैस मोल साइड इज फेवर्ड. तो लेस गैस वाली कौन सी है? ये वाली है. 2 moles. And that is why the yield of SO3 would be high. Yield output को कहते हैं. तो SO3 ज्यादा बनेगा. There's going to be more SO3 produced. ठीक है,
Yes, sir. Now it's clear. अच्छा, इसी तरह also remember one thing, कि when you talk about Lee-Shatler principle, यहाँ पे कहीं लिखा होगा, I mean, this is the summary of the Lee-Shatler principle, right? There's one very important point that has to be remembered, कि increased temperature endothermic, decreased temperature exothermic, and so on. So this is the summary. So equilibrium tries to oppose any change that is introduced. And remember, catalyst has no effect on equilibrium position. Both reactions, they speed up equally. Now, the important point is, never confuse equilibrium with rate. Okay, rate is something totally different. Equilibrium is something totally different. So when you talk about equilibrium, equilibrium is a relative comparison. ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ. So it's, remember this, that it's so remember this, it's a relative comparison. What I mean by that is, relative comparison का क्या मतलब है? Relative comparison is that when I say that one of the reactions is faster, that simply means, or one of the reactions favored, that simply means that one of the reaction is faster compared to the other one. हो सकता है कि both of them are slowing down, or maybe both of them are speeding up. But when we comment on equilibrium position, what we mean by that is that one of the reaction is faster compared to the other one. It's not a comment on the rate of the reaction. And let me explain this again. Okay, where's the example? Just a second. ये वाला example कर लेते हैं. अच्छा, if I say decreased temperature, so which reaction is favored? Exothermic is favored. This is the exothermic. So I'll say exothermic is favored. That means exothermic is faster compared to the endothermic. Okay, so it's a relative comparison. Now remember this, whenever you decrease temperature, जब भी temperature decrease करते हो, particles have less kinetic energy. So your particles have, they have lesser kinetic energy. The reactions would be slower because they would have fewer collisions. So reactions are going to be slower and they're going to have a lot fewer collisions. अब इसमें ये कि it's not, whenever you decrease temperature, that's a comment on rate. This is a comment on equilibrium. Both comments are different. ये कह रहा है कि decrease करोगे temperature, the reaction slow होगा. Both of them would slow down. The forward would slow down and the backward would also slow down because the particles have lesser kinetic energy. So they are traveling slower. Their speed is lesser. There would be lesser collisions. But when I comment on equilibrium, when I say कि equilibrium ये कह रहा है कि decrease करोगे temperature, so the exothermic reaction would be favored. That means that basically means the exothermic is faster compared to the forward one or the endo one. That simply means कि हाँ ठीक है, both of them are slowing down, but one of them is still faster compared to the other one. तो ये दोनों के बीच में difference पता लगा कि a comment on equilibrium is not a comment on the rate of the reaction. Is that clear? Mind clear, Mikhail? Umar Munib, is this Aisha clear? Yes, sir. तो ये याद रखना कि equilibrium is a relative comparison कि दोनों में से तेज कौन सा है. हो सकता है दोनों के दोनों slow down हो रहे हैं, और मतलब vice versa over here. अच्छा, यहाँ पे भी decreased temperature. What if I had increased temperature? So if I had increased temperature, both reactions would speed up. It's not just the forward or backward, it's both of them would speed up because at a higher temperature, you have more kinetic energy. If you have more kinetic energy, there would be much faster reactions. लेकिन जब हम equilibrium की बात करेंगे ना, if I increase temperature, endothermic would be favored. That means, ठीक है, both of them are speeding up, but this one would be still faster compared to the other one. So remember, it's a relative comparison. So don't confuse equilibrium with rate.
They're two totally different things. अच्छा, इस पे आ जाते हैं. Which statement about reversible reactions are correct? An increase in concentration of a reactant always increases the concentration of the products. So the first statement says कि ये reactants पड़े में और ये products पड़े. If I increase the concentration, where would the equilibrium shift? Right. ठीक है, तो equilibrium would try to do the opposite. It would try to decrease it, और वो to the right. तो products को क्या हो जाएगा? The products would increase. So it would always increase the concentration of the products. ठीक है, so that statement is correct. An increase in temperature always increases the rate at which now this one is about rate. He's not talking about the equilibrium. He's saying if you increase temperature, will the rate increase? Yes. And that is true. And it doesn't matter, the rate of backward and forward both would increase. I say an increase in temperature always increases the concentration of the product. Is that true? No. Because it will only favor the products if the forward reaction is what? Endo or exo? Endo. ठीक है, increase in temperature favors the endo. तो अगर product ज्यादा होने तो फिर वो कौन सा होना चाहिए? Endo होना चाहिए. So because an increase in temperature always favors the endothermic reaction and you'll get more products. So, but that is not always the case. Okay, the forward could be exo as well. So always wali baat jo na, that is what is wrong. Because any of the reactions could be endo or exo. अच्छा, next, अच्छा तो ये याद रखना कि अगर आप किसी चीज को कम करोगे तो वो ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ज्यादा करोगे वो कम करने की कोशिश करेगा. So if you increase the concentration of the reactants, it will try to decrease it. वो उसको कम करने की कोशिश करेगा. The way it tries to decrease it, it will try to move it in the forward direction. Now, what would alter the composition of the equilibrium mixture in favor of V2 plus ions? Yani in favor of V2 plus ions, you want more V2 plus ions. So, yani isko backward bhejna hai, in favor of V2 plus ions. So you want to push this backwards. Achha, can anyone tell me what will happen if an acid is added? First one, where would the equilibrium shift? And remember, an acid has this ion. It has an H plus 1 ion. क्या होगा, any idea? Will it have any effect on this equilibrium? Yes. How? I think because you're increasing the concentration on the left side. We're increasing the concentration of an acid, which is H plus 1 ions. There is no H plus 1 ions over here. But यहाँ पे किसकी concentration बढ़ा रहे हो? You're not changing the concentration of water. You're not changing the concentration of V2 plus. So, Yeah, my bad. अच्छा, so you're not doing anything, ठीक है, to any of the reactants, or are you? Well, इनमें से Mahin, any idea? किसी की concentration change हो रही है? Any one of them? So maybe the OH minus ions, since you add H plus and then the products. I mean, what will happen is that the H plus 1 neutralizes the OH ions. I mean, if you add an acid, the acid is going to neutralize the OH ions. Well, acid ka kaam hi hai, if you know basic acid bases, so acids neutralize OH ions. So their concentration would decrease, right? So if it decreases, where would the equilibrium shift? To the right. To the right. Okay, if the OH ion concentration decrease, the equilibrium would try to do the opposite. It will try to increase it. It will try to make more of it. ठीक है, तो वो उसको ज़्यादा करेगा. So it will move to the right. You don't want to move it. Remember, we want it to move to the left. Is that clear? Yes. Yes, sir. ठीक, mind clear है ये? Yes. So Aisha clear? Aisha, फिर मैं एक दफा बता रहा हूँ कि acid डालोगे ना, तो acid neutralizes OH ions. तो अगर आपके पास OH ions कम हो गया ना, तो वो उसको रूल ये ली शैटलर प्रिंसिपल का, अगर कम होगा ना तो वो ज्यादा करने की कोशिश करेगा. It will try to make more of it.
तो अगर ये कम होगा तो वो और ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा। तो लेकिन हमने कहा था कि वो बैकवर्ड जाना चाहिए, तो ये गलत हो गया पहला। अच्छा, एडिंग अ रिएजेंट दैट selectively precipitates B3 plus ions। तो इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब ये है कि if you add a reagent that selectively precipitates B3 plus ions, precipitates B3 plus ions, what does that mean? It kind of means you remove B3 plus ions. मतलब precipitate क्या होता है कि if you know what a precipitate is, कि if I have NaCl solution में I have NaCl and I want to remove Cl ions, so I can add silver nitrate to it. तो सिल्वर नाइट्रेट क्या करेगा कि ये दोनों आपस में ना मिल जाएंगे एंड सोल्यूशन में से ना चले जाएंगे, क्योंकि ये बॉटम के ऊपर ना दे वुड फॉर्म अ सॉलिड ऑफ AgCl, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर वो कह रहा है कि V3 प्लस आयंस का ना प्रेसिपिटेट बना दो, तो वो सोल्यूशन में से निकल जाएगा, इट वुड फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, इट वुड फॉर्म अ सॉलिड एंड दैट सॉलिड वुड सेटल एट द bottom. So you are basically removing V3 plus ions. तो अगर V3 plus ions कम होंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? ठीक है, टू द राइट। इट विल ट्राई टू डू द ऑपोजिट। अगर आप कम कर रहे हो तो वो और ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा, तो अगेन इट्स मूविंग टू द राइट। अच्छा, फिर तो ये भी गलत हो गया। अलाउइंग हाइड्रोजन टू एस्केप एज इट फॉर्म्स। तो अगर हाइड्रोजन एस्केप कर जाती है तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, राइट? वेयर वुड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट? ठीक है, अगेन टू द राइट। इफ यूर रिमूविंग H2, अलाउइंग इट टू एस्केप, कम हो रही है तो वो और ज्यादा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आंसर फिर आखिरी है कि व्हाट इज दैट, कि मेकिंग द सॉल्यूशन मोर अल्कलाइन। तो मोर अल्कलाइन का क्या मतलब है? यू एडिंग मोर OH आयंस। ठीक है, अल्कली मींस OH आयंस, सो यू एडिंग मोर ऑफ देम। तो अगर आप OH आयंस ज्यादा करोगे और उसको वो ज्यादा अल्कलाइन करोगे, तो what it will do is it will try to decrease it. How will it try to decrease it? कि वो OH ions को ना कन्वर्ट कर दे वापस किसी और चीज में। तो OH ions को रिमूव कर दे, OH ions को वाटर में कन्वर्ट कर दे। So that is what we are looking at, क्योंकि he said in favor of V2 plus ions, तो हमने अब ये V2 plus ions बनेंगे इसमें। So option number D is the correct one. ठीक है, is that clear? Yes, sir. अच्छा, फिर अगला वाला कि है this one is the same Lee Shatler principle. He's saying कि there's this reaction that's given, right? अब ग्राफ को थोड़ा इंटरप्रेट करना है। What is happening to the graph? ये Z की yield है, मतलब ये equilibrium amount of Z. You have to interpret the graph a little bit. What is happening when you increase pressure? You're increasing pressure in this direction. Amount of Z हर टेम्परेचर पे क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है ना, मतलब it is increasing, right? तो percentage of Z लोअर प्रेशर के ऊपर कम है, हायर प्रेशर पे मतलब हायर प्रेशर पे ज्यादा है। तो इसका मतलब है if you increase pressure according to the graph you get more Z. ये बात समझ आइए? But is that Yes, clear? sir. Yes. And that makes sense, because if you look at the equilibrium, if you increase pressure, कौन सी साइड फेवर होती है? Less gas, more gas? Less gas, right? Whenever you increase pressure, less gas mole side फेवर होती है। तो इसमें less gas mole side कौन सी है? इधर कितने मोल्स हैं? लेफ्ट साइड पे 2 moles है। There's 1 mole of this and 1 mole of this, और राइट साइड पे कितने हैं? That's just 1 mole. तो जब भी इंक्रीज करोगे प्रेशर तो लेस गैस मोल साइड, तो फॉरवर्ड फेवर होगा। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू, आई मीन यू शुड बी एबल टू रीड द ग्राफ एंड व्हाट इंफॉर्मेशन the graph is giving. Is that clear? Yes. अच्छा, सो ऐसे बात समझ आइए। चलो, the other one, okay, what if you now look at the temperature, higher temperature, ये ग्राफ हायर टेम्परेचर का है ना,
तो जी कितना बना है, लेस जी, मतलब वो कहीं भी देख लो तो 30% जी बना है। अच्छा ये वाला जो ग्राफ है टॉप वाला, दैट्स फॉर अ लोअर टेम्परेचर। अच्छा लोअर टेम्परेचर पे क्या बना है, जी ऑलमोस्ट 100% बना है, 90%, तो यू गेट मोर जी। इसको देख के मुझे बताओ, इनमें से which one is the endothermic reaction? हायर टेम्परेचर किसको फेवर कर रहा है, बैकवर्ड? Endo. नहीं, we know that higher temperature favors endo, but based on the graph, look at the graph, higher temperature you get less z, कम z बना higher temperature पे, lower temperature you're getting 90% z, तो higher temperature favors which one, forward or backward? Backward. ठीक है, हायर टेम्परेचर पे ये देखो you're getting, ठीक है बैकवर्ड सही है, you're getting less z, इसका मतलब कम जी बन रहा है हायर टेम्परेचर पे, इसका मतलब है कि हायर टेम्परेचर इज डेफिनेटली फेवरिंग द बैकवर्ड रिएक्शन, क्योंकि जी कम बन रहा है। ये भी क्लियर है, माइन इज दिस क्लियर आयशा? ग्राफ से क्लियर है कि हायर टेम्परेचर फेवर्स द बैकवर्ड रिएक्शन, अच्छा, ठीक है, और वो मतलब यहाँ पे क्लियरली लगा, बस इसका ग्राफ बहुत कम है, हायर टेम्परेचर पे कम जी है और लोअर टेम्परेचर पे देयर इज मोर जी, तो हायर टेम्परेचर जो है जी को फेवर नहीं कर रहा। और हमने क्या पढ़ा, हायर टेम्परेचर फेवर्स दी, you already know कि higher temperature favors endothermic reaction, वो ली शैटलर प्रिंसिपल का रूल है कि हायर टेम्परेचर किसको फेवर करता है, इट फेवर्स द एंडोथर्मिक, तो व्हिच मींस कि जो बैकवर्ड रिएक्शन है दैट मस्ट बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि जो बैकवर्ड है ना हमारा, दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो फॉरवर्ड उल्टा होगा, फॉरवर्ड वुड बी द exothermic. By looking at the graph we're able to figure out which one is endo, which one is exo, क्योंकि हमने पहले तो figure out किया from the graph that a higher temperature favors the backward reaction, ठीक है, वो इधर वैल्यू से पता लग गया था कि वो जी कम बन रहा है हायर टेम्परेचर पे, तो इट मस्ट बी फेवरिंग द बैकवर्ड, उल्टा रिएक्शन फेवर कर रहा होगा। And we also know from Lee-Shuttle principle that higher temperature favors the endothermic reaction, which now kind of, if you join the dots, it's going to be कि वो backward reaction ही endothermic था, इसलिए तो higher temperatures को favor कर रहा था। तो anyways, coming back to the question कि ये equilibrium constant वाला तो अभी नहीं हम करेंगे। The reaction is exothermic in the D is the correct answer. The reaction is exothermic in the, क्योंकि हमने backward को figure out कर लिया था, the backward is endothermic, so the reaction is exothermic in the forward direction by studying the graph. Is that clear? yes sir. और बाकी equilibrium constant वाले तो छोड़ दो options. Decreasing the temperature increases the rate of the reaction. That is incorrect, क्योंकि if you decrease temperature, the rate of the reaction would also increase. तो ये वाला तो सारों को क्लियर है ना, just make sure how to read the graph, कि अगर उन्होंने इसी को graphical form में दिया हुआ है, सही है, क्लियर है? Yes. So now I have this question, उसने कहा if the temperature of an equilibrium mixture of the gases, temperature increase कर रहा है, endo or exo, which one is going to be favored? What happens when you increase temperature? Endo. ठीक है, endo would be favored. इसको फिर एक दफा देख लो, वो किधर हमारा समरी जो है कहाँ गया, ये है, ठीक है, whenever you increase temperature, endo is going to be favored, ठीक है, तो increase temperature, endo will be favored. तो क्वेश्चन ये कि which one is the endo, is the forward endo or is the backward endo? तो Backward. नहीं, ये प्लस दिया हुआ है, ये जो एंथैल्पी चेंज होती है किसकी दी होती है, the enthalpy change is always तो given, सिर्फ backward नहीं होगा endo. नहीं एंथैल्पी चेंज में तो क्या है, एंडो है एक्सो है, प्लस का क्या मतलब होता है? Endo. Or since it's positive, it's endo. Yeah, my bad. तो ठीक है, और ये हमेशा फॉरवर्ड का दिया होता है, दिस इज ऑलवेज गिवन फॉर द, Forward. Yeah. तो द फॉरवर्ड इज एंडो, ठीक है, तो बैकवर्ड जो है ना उल्टा होगा, इट्स गोइंग टू बी एक्सो। अच्छा एनीवेज, तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा, मतलब एंडो इज गोइंग टू बी फेवर्ड, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड
जो है वो फेवर होगा. NO2 की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी and the amount of N2O4 would be lesser. तो वो कह रहा है कि will the volume of the mixture increase or decrease and why? तो आप पहले तो बताओ कि ये तो क्लियर हो गया, endo is going to be favored. तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, गैस का कम हो जाएगा कि if endo is favored. क्योंकि the question is about the volume of the mixture. एक मॉलिक्यूल था, मतलब बैकवर्ड को हटा देते ना, endo is favored, right? One molecule turns into two molecules, right? So what will happen to the volume? Increase or decrease? Increase. So it will increase, right? So the volume will increase. And why will it increase? Because there's a shift of equilibrium towards the right. क्योंकि endo favor हो रहा है ना, right की तरफ जा रहा है. ये बात clear है? Yes, sir. Yes, sir. So but this statement is actually partially correct. क्योंकि I mean this statement is correct. I mean there's nothing wrong with it. ठीक है. लेकिन the correct one is I think B. B में भी यही है. The volume will increase because of a shift of equilibrium towards the right. So this one is exactly like A. And also because of thermal expansion, क्योंकि ये थोड़ा physics आ गई है कि thermal expansion क्या होता है, जब higher temperature पे जाता है तो gas तो वैसे ही expand करती है क्योंकि you're increasing temperature, right? So whenever you increase temperature तो gas ने तो वैसे ही expand करना ही करना है. यहाँ पे ज्यादा क्यों expand कर रही है? क्योंकि वो right की तरफ shift भी हो रहा है, तो वो एक molecule दो double हो गए molecules, ठीक है? तो ये वाली जो statement है ना, although first में कोई मसला नहीं, the first one was right, but the second one is even more right. It's more right compared to the first one. Is that clear? Yes, sir. तो although ये thermal expansion का ना, इससे equilibrium से कोई काम नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो बस basic physics है कि भाई temperature अगर बढ़ाओगे ना तो gas जो है that will expand. ठीक है? Is that clear? Yes, sir. अच्छा, फिर ये कि वो कह रहा है कि मैं वैसे when the temperatures increase, which gases and bulb are would cause the mercury level in the right hand limb of the manometer to rise. ये right hand limb है. वो कह रहा है mercury level है इधर ज्यादा होना चाहिए. वो इधर क्यों ज्यादा होगा? यहाँ पे गैस ज्यादा बनेगी, कम बनेगी इस साइड पे? मतलब if the mercury was to rise from that side, तो इसका मतलब है कोई चीज यहाँ से उसको पुश कर रही है ना. Is that clear? Yes, sir. तो गैस का अमाउंट जो होगा वो ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगी यहाँ पे? मतलब ज्यादा होनी चाहिए ना. कि मतलब अगर आपके पास लेट्स से 3 मॉलिक्यूल्स थे, इक्विलिब्रियम हुआ, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए. तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए तो वो ज्यादा पुश करेंगे, तो मर्करी लेवल यहाँ से राइज करेगा. तो इज दैट क्लियर कि the gas or the amount of gas should increase on this side? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तभी ये लिम्ब इधर से राइज करेगा. ठीक है. अच्छा, तो वो कर क्या रहा है? उसे चेंज क्या किया? he's changing he's saying that temperature increase. I mean that's the only thing he did. मतलब यहाँ पे लिखा है टेम्परेचर इंक्रीज. तो हमारा पॉइंट ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे गैस ज्यादा हो जानी चाहिए. ठीक है. सो गैस एक्स, मतलब एक्स में जो भी गैस है, शुड इंक्रीज, तभी वो मर्करी जो है ना वो एक साइड से राइज करेगा. ठीक है. अब पहले पे आ जाओ. एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, मुझे था वेयर वुड द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इफ यू इंक्रीज. वो कह रहा है कि ये एक्स क्या है या एक्स के अंदर क्या है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज कि X is this thing. It's an equilibrium mixture containing this and this, and the enthalpy change is positive. अब मुझे बताओ कि if the temperatures increase, what will happen? Which reaction would be favored, forward or backward? Forward. ठीक है. तो endothermic है, forward is endothermic. तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो forward बढ़ जाएगा. और अगर is that clear कि forward is endothermic, right? ऐसा ही clear है? Mine clear है? Yes, sir. So, Mine, can you hear me? Yes.
Acha, so if in this case it's going to be forward. Okay, if you increase, remember he's increasing temperature. ठीक है, so the forward would be favored. तो obviously gas ज़्यादा हो जाएगी, वो 2 molecules बन गए. तो ये बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इधर क्या होगा कि if you increase temperature, which reaction would be favored, forward or backward? Backwards. ठीक है, क्योंकि forward जो है वो तो exothermic है ना, तो backward endothermic होगा. लेकिन उससे amount of gas पे कोई फर्क पड़ेगा? Will there be any change in the amount of gas? There's 1 mole of gas that turns into 1 mole of some other gas. So the amount of moles of gas would remain exactly the same. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब है इससे आपका वो मर्करी का जो लेवल है ना, that will not change. क्योंकि वो तभी चेंज होगा if the gas increases. पहले वाले केस में there was more gas being produced and the amount of gas increased and that pushes the mercury on this side. But over here, nothing would happen. क्योंकि अब वो जहाँ मर्जी शिफ्ट हो, amount of gas में चेंज नहीं आ रहा. ठीक है. और लास्ट वाला भी गलत होगा कि अगर दोनों साइडों पे भी नाइट्रोजन होगा कि इस साइड पे भी मतलब इक्विलिब्रियम है ही नहीं, इस साइड पे भी N2 है और उस साइड पे भी N2 है, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस तो चेंज हो ही नहीं रही. तो द थर्ड वन इज आल्सो इनकरेक्ट. इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये था कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो फर्स्ट वन था उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे लेवल ऊपर हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे गैस जो है ना वो ज्यादा हो रही है जो उसको पुश कर रही है. तो वो सिर्फ पहले वाले केस में कि if you increase temperature there's going to be more gas that's going to be produced and that is going to push the mercury level to the other side. Is that clear? Yes, sir. चलो ठीक है. Sir, हाँ जी. I have checked the proof, it's up till the optical isomers नहीं कौन for सा? organic. Sir, the board link is up to the optical isomers, नहीं कौन सा बोर्ड लिंक? organic chemistry. नहीं मैं दूसरा भेज देता हूँ, एक सेकेंड. चलो मैं भेज देता हूँ. And sir, have you uploaded that lectures? The previous ones? Before वो this उस पे topic? बने होंगे प्लेलिस्ट. मैंने एक वो शीट भी सेंड किए. चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च करो ना. Sir, the playlist में कोई lectures upload नहीं हुए bottom पे. नहीं किस प्लेलिस्ट के? नहीं उसमें चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारी प्लेलिस्ट है. Okay. वो आपने एक ही प्लेलिस्ट मेरे ख्याल से वो की हुई है जो आप शायद. हाँ चलो मैं वो दोनों देखता हूँ. ठीक है, ठीक है सर. बोर्ड लिंक में भेज दो. चलो ठीक है. ओके देन टेक केयर. All right, sir. Allah Hafiz. That's all.